Asalam-o-Alikum and welcome back. So our today topic is about the chain-based method. So what is chain-based method? Chain-based method. So we will calculate it with the help of example. So we already know the formula that price relative formula is P equals to current price, which is Pn, and we already know it. Current price divided by Pn minus 1, which is previous year price, Pn minus 1 into 100. So इस फार्मूले को यूज करके हम चेन बेस्ड मेथड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So we have years. Then next we have prices. Then next we have link relative. So link relative. And the last we will calculate the chain index number. So chain is C, index is I, chain index number. So we will start it with the 1960. So at the year 1960 we have the price which is 5. 1960 as well as we will take it from 1960. So 1961 की बात करेंगे, 1962 को भी लेंगे, 1962. The next one we have 1963. 1963 and the next one 1964. 1965, 65 and 1966 को भी ले लेंगे, 1966. सो प्राइसेस भी ले लेते हैं. 5 ले लिया हमने, फिर उसके बाद हम लेंगे 6, उसके बाद ले लेंगे 8, उसके बाद ले लेंगे हम 7, उसके बाद हम ले लेंगे 9, 10 और the next one is 12. So with the help of these two we will find the link relatives as well as this is link relative. So link relative and chain index number. So हमारे पास जो लिंक रिलेटिव है फर्स्ट का, यानी कि 1960 की हम बात कर रहे हैं, तो 1960 में हमारे पास जो लिंक रिलेटिव है वो 100 ही आएगा, क्योंकि उसका जो प्रीवियस ईयर है यानी कि 1959 वो गिवन नहीं है, तो हम एज इट इज लिख लेंगे. हमारे पास जो करंट का है वो 100 ही आएगा. द नेक्स्ट वन वी हैव, अगर हम 1961 की बात करते हैं तो 1961 की बात करने के लिए हमारे पास 1960 ऑलरेडी गिवन है. सो
हम जो करंट प्राइस है, अब यहाँ पर फार्मूला यूज होगा, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस विच इज 5। सो 5 को हम डिवाइड करेंगे और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1961 का विच इज 120। With the help of calculator, we will easily solve it. The next one we have 1962. So 1962 की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो प्राइस है करंट वो है 8 और प्रीवियस ईयर की जो प्राइस है वो है 6। सो चेन बेस्ड मेथड है, जो प्रीवियस ईयर का है वो चेंज होता रहेगा और करंट प्राइस का भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम चेन बेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई फिक्स बेस मेथड की बात नहीं हो रही। सो एवरी डिजिट विल चेंज, कोई एक भी डिजिट जो है वो फिक्स नहीं रहेगा। सो 8 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100 वी हैव 133.33। The answer is 133.33। The next one we have 7. The price is 7. So 7 divided by the 7 is the current price divided by previous year price which is 8 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से which is it is 7.5 7.5। The next one we have 1964. So 1964 divided by 1964 का जो प्राइस है वो है 9। सो 9 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सो 9 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100, so we have 128.5 128.5। The next one which is 1965. So 1965 का जो प्राइस है वो है 10। 10 को हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 10 divided by 9 multiplied by 100 which is 111.11। 111.11। The next one we have 1966. So 1966 की जो प्राइस है वो है 12 और 12 को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की प्राइस से which is 10 and multiply by 100। फॉर्मूले का जो 100 है वो एज इट इज सबके साथ आएगा। सो इक्वल्स टू वी हैव 12 divided by 10 multiplied by 100 which is 120। 120। अब हम बात करेंगे चेन इंडेक्स नंबर की। तो चेन इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो 100 है वो तो एज इट इज ही रहेगा। The next one we have 1961 की बात करें तो 100 प्रीवियस ईयर का मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइसेस विच इज 120। लिंक रिलेटिव की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, क्योंकि चेन इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, और डिवाइड करेंगे हम इसको 100 के साथ।
तो आंसर हमारा है 120. The next one we have 120 multiply by current, which is 133.33, 133.33. डिवाइड करेंगे टोटल 100 के साथ. 100. सो हमारे पास आंसर इसका आएगा 160. The next one we have 160. जो आंसर आया था 160 multiply by current, which is 87.5, 87.5, और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ. हमारे पास आंसर आ जाएगा 140. 140. The next one is 128. So 140 into 128 0.5 into 100 divided by 100, sorry. So the answer is 179.9. 179.9. The next one we have 179.9, 179.9 multiply by 111, or we can say 111.11. So 111.11 divided by 100. So ये इक्वल आ जाएगा 199.89. 199.89. The next one we have, or we can say the last one. So 199.99, 199.89 multiply by 120 divided by 100.
So the answer is 239.87 to 39.87. In the next class, we will calculate other formulas